विधेयकों द्वारा पंजीकृत की जाती है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए है, जिनके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है और केंद्रीय पंजीयक द्वारा इसके पंजीकृत किया जाता है। यह विधेयक पूर्णतः संसद की विधायी क्षमता में है। यह विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत प्रस्तावित है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 व उससे पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 में भी इस प्रविष्टि के अंतर्गत संसद में ये पारित किए गए हैं। अतः ये विधेयक संसद की विधायी क्षमता में है। बाकी प्रश्नों के बारे में विधेयक पर खंडवार चर्चा जब होगी तब उसको उत्तर दिए जाएंगे। अतः मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। बात करेंगे। आप सबसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहे। नहीं, आपको सबसे विचार करेंगे इस विषय पर लाने के पहले, फिर विचार करेंगे। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। अब मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन का अनुरोध करता हूं। आइटम नंबर 14 नियम 377 के अधीन आज सभी मामले बोलने का मौका मिलेगा। 377 के अधीन श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। The prime reason for India's poor performance in combating air pollution is the insufficient capacity building of municipal corporations and district subdivision administrations under the National Clean Air Program. Sir, reportedly, most of the cities mandated to submit their respective city action plans have only replicated each other's initiatives. Some local governments have either underspent or diverted the majority of funds towards projects not at all related to the National Clean Air Program. Comprehensive monitoring mechanisms must be developed by the union government to prevent such activities of the local governments. From the financial year 2022-23, presenting evidence for the increased number of good days and reduction in PM10 annual average concentration is mandatory to receive the 15 Finance Commission recommended grants. This requirement neglects the need for essentials such as building a robust monitoring framework. Only 69 out of the 132 NCAP cities have real-time monitoring stations. In 2020-2021, the NCAP was clubbed with other items under control of pollution, and the budget was marginally reduced. Many mostly polluted cities are provided with reduced NCAP funds or no funds at all. Thus, the states must be provided freedom in NCAP funds allocation, since the top-down approach is not apt to reduce air pollution. Thank you very much. रोडमल नागर जी। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान मां
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri K.R. Jayadevappa, Sri Syed Sibte Raji, Srimati Jayanti Patnaik, Sri Ahmad Saeed Malihabadi, Srimati Ila Ramesh Bhatt, and Sri A. Jinnah, former members of this house. Sri K.R. Jayadevappa passed away on the 23rd December 2021 at the age of 84 years. Born in March 1937 at Malakera village in Devnagari district of Karnataka, Sri Jayadevappa served as legal advisor to the city municipality, Agriculture Produce Market Committee, and several banks of Devnagari, Karnataka. He represented the state of Karnataka in this house from April 1992 to April 1998. In the passing away of Sri K.R. Jayadevappa, the country has lost a proficient advocate and an able parliamentarian. Sri Syed Sibti Raji passed away on the 20th of August 2022 at the age of 83 years. Born in March 1939 in Amethi district of Uttar Pradesh, Sri Raji was actively involved in child and youth welfare and upliftment of weaker sections of the society. Sri Syed Sibte Raji represented the state of Uttar Pradesh in this house for 3 terms during 1980 to 1998. He also served as the governor of the states of Jharkhand and Assam during 2004 to 2009. In the passing away of Sri Sibte Raji, the country has lost a dedicated social worker, an able administrator, and a distinguished parliamentarian. Srimati Jayanti Patnaik passed away on the 28th September 2022 at the age of 90 years. Born in April 1932 at Aska in Ganjam district of Odisha, Srimati Patnaik was actively involved in espousing the cause of women and the promotion of sports. She has the distinction of being the first chairperson of the National Commission for Women, an office she held from 1992 to 1995. Srimati Jayanti Patnaik served as a member of the 7th, 8th, and 12th Lok Sabha and as a member of this house, representing the state of Odisha from April 1996 to March 1998. In the passing away of Srimati Jayanti Patnaik, the country has lost an eminent social worker, a sports enthusiast, a champion of the rights of women, and a distinguished parliamentarian. Sri Ahmad Saeed Malihabadi passed away on the 2nd October 2022 at the age of 92 years. Born in October 1930 at Malihabad in Lucknow, in Uttar Pradesh, Sri Malihabadi had worked with Mahatma Gandhi during his stay at Kolkata in 1947 during pre-partition and post-partition of India for peace and communal harmony. A journalist and a writer, Sri Malihabadi served as the chief editor of Azad Hind and Urdu Daily, published from Kolkata. For over 6 decades, he represented the state of West Bengal in this house from April 2008 to April 2014.
In the passing away of Sri Ahmad Saeed Maliabadi, the country has lost a veteran journalist, a scholar, and an able parliamentarian. Srimati Ila Ramesh Bhatt passed away on the 2nd of November 2022 at the age of 89 years. Born in September 1933 at Ahmedabad, Gujarat, Srimati Ila Ramesh Bhatt lived by the Gandhian spirit of trusteeship, non-violence, and self-reliance. In 1972, she founded the renowned self-employed women's association, SEWA, one of the largest women's cooperatives with over 2 million members from across the country and in neighboring nations. Srimati Ila Ramesh Bhatt was the recipient of several national and international awards. Both PMs renewed the commitment towards enhancing India-Japan strategic and global partnership and to work towards promoting regional and international cooperation. The Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres, paid an official visit to India from 18-20 October and joined Prime Minister in Kevadia to jointly launch the Lifestyle for Environment, LIFE initiative. Heads of state and governments from France, UK, Estonia, Georgia, Maldives, Nepal, Madagascar, Mauritius, Argentina, and Guyana contributed with the messages of support for the LIFE initiative. Allow me, Chairman Sir, to now turn to the subject of G20. As the House is aware, the Prime Minister attended the Bali G20 summit recently, and we soon thereafter assumed its presidency. G20 is the premier forum for global economic cooperation, representing around 85% of the global GDP, over 75% of worldwide trade, and about 2/3 of the world's population. Prime Minister has noted that India's presidency of the G20 during the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav is a matter of pride for every Indian. The G20 meetings have already commenced in India, and our endeavor is to organize about 200 of these meetings in 32 different sectors in multiple locations across India. The G20 summit is to be held next year, and it would be one of the highest profile international gatherings to be hosted by this country. During the G20 Bali summit held under Indonesia's presidency, India extended fullest support to ensure its success. Our contribution to finding a common ground among members in a polarized environment was widely appreciated. Prime Minister also held discussions with counterpart leaders on key issues of global concern. They focused mainly on reviving global growth, ensuring food and energy security, promoting technology, preserving environment, and addressing public health and digital transformation. As is customary, many of these opportunities also provided an occasion to take stock of our bilateral relationships. Since we are assuming that responsibility, this was also a time to seek the support and cooperation of all G20 members for the success of India's presidency. Honorable members are aware that the G20 is taking place in the larger context of a geopolitical crisis. Food and energy insecurity, slow progress on sustainable development growth, mounting debt burden, and challenges to climate action and climate justice. Our endeavor is to build consensus within the G20, champion causes, especially of the Global South, and shape the setting of the agenda. This will also be an occasion for us to highlight the 3 Ds of India: development, democracy, and diversity. In our global engagements, we have discerned strong interest in India's digital delivery, public health response, green growth and development, as well as the empowerment of all sections of society. There is also an enhanced interest in our democratic traditions, which go way back in our pluralistic and consultative culture. We envisage the G20 presidency as an occasion to showcase India to the world,
This will be done through cultural activities, regional festivals, technology programs, sustainability initiatives, millet promotion, one district, one product promotion, community engagement, and civil society activities. Our presidency will witness a Jan Bhagidari, where all of India would not just participate, but celebrate this occasion. As the House is aware, government has briefed leaders of political parties in this regard. We see this as a truly national endeavor and seek the cooperation of everybody to make it a success. I would also like to highlight that India will provide a stronger voice to issues of interest of the global south. This is very much a part of our DNA. It was in evidence most recently during the vaccine Maitri. Our emphasis will be on sharing the India story, caring for all, and taking collective action. It will focus on emphasizing our achievements and priorities such as digital India, clean energy, sustainable lifestyles, women-led development, and multilateral reforms. Prime Minister's initiative on lifestyle for environment, and India's millet initiative, which has resulted in the UN declaration of the year 2023 as the International Year of Millets, would also be prominent in India's approach towards addressing the SDGs. Today, we are building stronger bridges with both developing countries and advanced economies. Apart from our G20 presidency, we are members of a growing number of groups and mechanisms. Some of them are relatively established, like the BRICS and Commonwealth. Others have been more recent, like the Quad and SCO, and still others are emerging, like the I2U2 and the Indo-Pacific Economic Framework. We are also increasingly engaging the world in group formats, reflecting the growing interest on their part to cooperating with India. This could be with the ASEAN, with Africa or the Pacific Islands, or indeed the Nordic nations, CARICOM, CELAC, or Central Asia. Our growing collaboration with the European Union is of particular importance. Chairman, sir, I would like to share with the House that the ministers of MEA have been equally active during this period. I have myself hosted the foreign ministers of Maldives, France, Singapore, Botswana, United Kingdom, Ghana, Gabon, Belarus, Syria, UAE, and Germany in this period. I would also highlight the India-Singapore Ministerial Roundtable and the collective interaction with 12 African ministers dealing with education and skills who are here at the invitation of my colleague, Dharmendra Pradhan, that took place in Delhi. It would give the honorable members a sense of the breadth of our engagement and the growing global interest in India. This was also in evidence during my outgoing visits to Thailand, Brazil, Paraguay, Argentina, UAE, Japan, Saudi Arabia, Uzbekistan, USA, Australia, New Zealand, Egypt, and Russia. It was my privilege to represent India at the UN General Assembly high-level segment this year. I took the occasion to engage with the G4, the L69, Quad, IPSA, BRICS, CELAC, and CARICOM, and hold multiple trilaterals and bilaterals. Our ministers of state have been equally vigorous in promoting India's interests abroad. Sri Muralidharanji went to Brazil, Senegal, USA, Oman, Djibouti, Kenya, Eritrea, and Nigeria. Srimati Meenakshi Lekhiji represented India at the SICA summit at Kazakhstan and visited Georgia, Norway, Iceland, and Malta. Dr. Rajkumar Ranjan Singhji was our representative at the IORA Ministerial and visited Indonesia. So the House would also be aware that as the chair of the Counter-Terrorism Committee of the UN Security Council, India hosted its special meeting in October. All 15 members participated and paid homage to victims of the 26/11 terrorist attack at the Memorial Wall in the Taj Mahal Palace Hotel. This was the first time that the UNSC held a meeting in India. The Delhi Declaration emphasized the need to display zero tolerance towards terrorism and to combat it in all its forms and manifestations. Chairman, sir, I'm happy to inform the House that after a gap created by COVID, India will be hosting the 17th Pravasi Bharatiya Divas at Indore
from 8 to 10 January 2023. This year's theme acknowledges the contributions of Indian diaspora as, quote, diaspora, reliable partners for India's progress in Amrit Kal, unquote. The 32 million Indian diaspora is a great source of support for our country. India's 4C commitment of care, connect, celebrate, and contribute would be on display during these celebrations. His Excellency President Mohammad Irfan Ali of Guyana will be the chief guest of the Pravasi Bharatiya Divas 2023. Where Republic Day 2023 is concerned, we have invited His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt as the chief guest. He has graciously accepted the invitation. Honorable members would also be glad to know that the 12th World Hindi Conference will be jointly organized by India and Fiji from 15 to 17 February 2023 at Fiji. This will be the first occasion for hosting this event in the Pacific region. Chairman, sir, foreign policy today is no longer just an exercise of a ministry or even simply that of the government. It has a direct impact on the daily lives of all Indians. This may be in ensuring that our products have market access or that our talent gets into the global workplace. But it is equally an effort to ensure that technology, best practices, and capital flow into India. Our endeavor in a difficult global situation is that the welfare of the Indian people is ensured, however challenging the circumstances. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms. Or indeed, in concluding migration and mobility partnerships, as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in the acceptance globally of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth, and security. Honorable members know this well and understandably approach the ministry sometimes with their particular concerns and issues. It has been our earnest effort to respond as effectively and as sincerely as possible to their communications. We are extremely conscious that foreign policy must respond to the requirements and demands of our society. We demonstrate that as much through the activities of our embassies abroad as we do at home through improved passport and immigration services. I have every confidence that this August House does appreciate both our promotion of national interests abroad as well as our responsiveness to the daily requirements of our people. I conclude with the expectation that the House will continue to extend its fullest support to our efforts and encourage our success in the G20 presidency in particular and foreign policy in general. Thank you. सर, G20 में भी मुलाकात हुई होगी, कई जगह मुलाकात हुई होगी। क्या जहां हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उस चीन सीमा के संदर्भ में जहां चीन ने बलपूर्वक कब्जा किया, कोई वार्ता आपकी हुई है? बस इतना ही जानना चाहता हूं। आप बताना चाहें बताएं, और अगर बताने लायक ना हो तो मत बताइएगा। I think one second. I had made an appeal to the honorable members, and you are more cognizant than I am. This is a House of Elders, the upper house. We are required to conduct our proceedings in a manner that generates an ecosystem of emulation all over. The Honorable Minister has imparted a very thorough statement. Members of the House are entitled
to seek clarifications. In a methodical manner, input has been made available to me. I would be happy that others also follow the same system. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. I'd like to thank Honorable External Affairs Minister for a very detailed and expansive statement about India's foreign policy outreach, as well as meeting domestic requirements. I have just two clarifications to ask to Honorable Minister at paragraph number 12. There is a general statement at number of paragraphs regarding India's leadership role in the technology front. On the specific question of trusted cross-border data flow, as well as to deal with virtual digital assets, would India be considering promotion of a global body to have a principle-based global order on the lines of the WTO, or would it like to do this entire thing within the ambit of WTO? The second clarification, sir, is that all over the world, wherever I travel, the question of inequity, particularly in the areas of health, area of education, digital inequity, these arise, but in Africa, for example. Would India be taking the lead in putting this particular ethos in the G20 and represent the least developed countries of Africa, Asia, and Southeast Asia to the global north? Thank you so much. Honorable Minister. So, with regard to the clarification sought on digital. Minister, finally, the Honorable Minister would respond. I have another list with me, just given to me, Shri Vaiko. We have three more names, Honorable Minister. Initially, there was one. Honorable Mr. Chairman, sir, the statement given by the minister shows very clearly that our mutual interest with other countries and our positive approach towards other countries. But I would like to know, Geneva, under the United Nations, it is a very important organization. There, when the voting took place regarding Sri Lanka, for what reasons India abstained from voting? This is my first clarification. I want to reply from you. Second thing, at our doorstep, the genocide took place. Lakhs and lakhs of Tamils were killed, and women were raped, and children were killed, and the previous government gave weapons. That is different. But now, when all these things have happened, you are giving support now to Sri Lanka. But Sri Lanka has leased out Hambantota port to China, and recently also Chinese warship landed in the port, compromising our national security and coastal security. It will have a serious bearing on India's security and economic and strategic interests and maritime and coastal facilities. On this important issue, what steps you have taken to protect the interests of India? Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir. My compliments to you on assuming a charge. My first compliment to Honorable Minister, sir. It is very comprehensive. You almost touched every aspect of it. But there are certain concerns which I would like to know from you. Many a time when we read about Government of India's stand or position paper, it seems that the foreign policy has only been shaped by after 2014. So this 2014-centric approach of foreign policy undermines the people and the processes which were involved since 1947. Number one, sir. Number two, India had a very stated position, Honorable Minister, sir, through you, Honorable Chairman.
In a conflict between oppressor and the oppressed, India never was neutral. Between a fight between an elephant and an ant, if your neutrality helps the elephant, I think there somehow, recent developments in Gaza, I think I didn't hear anything from government of India. And finally, between Ukraine and Russia, it was a very, very delicate chapter. We have our versions different from you, but whatever I think you could create a space, you did, but it could have been better. Thank you so much, sir. Dr. John Bittas. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me also congratulate you taking this opportunity. I'm glad that the Honorable Minister made a very detailed statement touching every point. At the same time, I support my colleague, Mr. Manoja, that he has avoided dealing with the Palestinian cause, for which India has been always steadfast. So I would request the Honorable Minister to have his response on that. So the second clarification is that there have been a lot of talk regarding the extent of pressure exerted by the West on India with regard to the purchase of oil from Russia. The minister has been very diversionary on that point. I would request him to obviously pronounce his mind on that. So the third point is that there has been a price cap imposed by the European Union with regard to the oil price from Russia, how it is going to impact the purchase of oil from Russia vis-a-vis India and Russia. So the fourth point is that, is it not a fact that the chairmanship of G20 is on a rotational basis? And if so, the theme that one earth, one family, one future, will the government respect the diverse culture of India while campaigning on this slogan? And the last point, sir, not the least, sir, there have been thousands of students who have come back from Ukraine. And there was a statement by the Honorable Minister last time. I would like to know from the Minister whether all these students have gone back to Ukraine or how he has facilitated the study further. Thank you, sir. Shri Tiruchi Siva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, we appreciate our Prime Minister's voice at Samarkand, declaring that this is not an era of war. But the Ukraine war is still going on. The people there are undergoing so much of struggle. They are struggling for basic food and everything. Other than the students who have come here, whose future is still in a question and they have not yet been resolved. In a humanitarian consideration, India has always intervened wherever there is some problem for any human being in the world. So in this context, what are the steps our government is taking to put an end to this war and save the people of Ukraine, as well as to restore the students who have returned from there, to find a way for those students who have returned from Ukraine? Thank you, sir. Shri Thambi Durai. Thank you very much for giving the opportunity. Sir, our Honorable Minister gave detailed explanation and a statement regarding the foreign affairs thing. I appreciate him. And also, especially G20, which is going to take place, is a very is a good for our Indian country. Our Modi ji has taken a lot of efforts, appreciate. But, sir, as our Honorable Member Vaiko ji raised on issue, Sri Lanka Tamil issue, apart from that, Sri Lanka and India had a pact to solve the Sri Lankan Tamil issue. That I'm giving some amendment and protect the rights. What is the stage now? That is, at the time, Jayavardhane and Honorable former Prime Minister Rajiv Gandhi, they made an agreement. Whether the government is very seriously insisting that to get the, because when we are conducting a program, the G20, it is a prestige for India. At the same time, our neighbor, our brothers who also has said died and also for certain causes. But what is the fate of that fact? Whether government India has taken a serious step on this thing? Mr. Sujit Kumar.
Sir, I will certainly commend the Honorable Minister for his detailed statement on India's foreign policy and for providing competent leadership. Sir, I have a specific query for him. Sir, while all eyes are on the World Cup in Qatar, sir, little is known about the fate of 8 Indian ex-naval officers who are in detenue in that country for close to 100 days now. Sir, as per newspaper reports, they were picked up in the middle of the night from their home and are kept in solitary confinement since 30th of August. And consular access was provided to them only on 3rd of October. Sir, the family members have expressed serious concerns about the health, mental harassment of the ex-heroes of our country. And sir, it seems that MEA is not very forthcoming on what dialogue is going on with the Qatari government to secure and seek their release and repatriation. And also, sir, it is believed that this has been done and they have been charged with espionage, apparently at the behest of one of our neighbor, unfriendly neighbor. So, sir, from you, through you, sir, I would like to know from the Honorable Minister, what are the steps being taken by the Government of India to seek the release of our former heroes? Thank you. Mr. Pramod Tiwari. No, he was interrupted. I asked him to take seat because it had not come through a method. Go ahead. सर, मेरा सिर्फ एक विनम्रता पूर्वक राष्ट्र हित में एक सवाल है कि मिले होंगे आप, वहां अच्छी बात भी हुई होगी, G20 में भी मिले थे और जगह मिले थे। हमारे 21 जवानों की शहादत हुई है भारत चीन सीमा पर। कुछ भूभाग भी उन्होंने काफी कब्जा कर रखा है। क्या उसके संदर्भ में कोई वार्ता हुई हो तो आप अवश्य बताएं, पूरा राष्ट्र जानना चाहता है, ये आवश्यक है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। Mr. Vinod Vishwam. Sir, thank you. Sir, the statement made by the Honorable Minister Jaishankar ji is so important to the contemporary times. And the keen interest the House attributed to him shows that how important it is for this House also. I am grateful to the Minister and for his broad-heartedness. So on certain questions, I share the views raised by my colleagues like Manoj Kumar Jha and John Bittas and some others. Sir, certain questions, India has to be very clear that on Palestine, always we were having a position. We stood with the people of Palestine. We regarded them always as our friends and sons and daughters. Now we feel whether there is a tilt of our voice in that matter. Kindly be clarified. Sir, just like that, the concerns of the students who came from Ukraine is haunting all of us. I know that the minister also tried his level best, but still they are having anxiety of their future, their families too. Kindly adjust them. Sir, the third point is that the SAU, South Asian University, run by the SAARC countries. India is hosting it in Delhi. Sir, the SAU students and the teachers are facing a problem. That has to be settled. I am very sure that the diplomatic skill of our minister can help it. I am very sure that he has intervened. I wrote to him, he replied to me also. But I am very clearly telling you, the matters are yet to be answered clearly. So please, sir, serve the issue. My next point is that regarding the, I went through the agenda of G20, and now we are the chairman. The chairmanship is rotation, sir. Last year it was Indonesia. Next year somebody else will come. It will come. So it is very good that India is now the chairman. Of course, by rotation. During this chairmanship, we believe that our great country will make its own impact on the G20 countries and all over the world. In that regard, I may ask the government. In the agenda of the G20, I read women empowerment is an important issue. Women empowerment. Will the government be positive enough to enact the women reservation bill during this period? My question. Next question is that regarding the environment. He also mentioned it. The agenda of the G20, environment and climate change is very properly focused. And now we see that in Khabar Islands, my friends knows it. Subhandar Yadav knows it. Big disastrous steps are being taken there.
lakhs and lakhs of trees are being cut off. And the balance of the island and the whole situation area is the Clarification, disturbed. So clarification. I request the, no. So Focus the point. I am focusing on you, sir. I am focusing on you, and I am focusing on you of the protection also. Sir, some friends there, out of their voice or enthusiasm, they want to raise voice and make people silent. Lieutenant General. I can tell you, that's not the way of the house. I want to conclude that. Let me conclude. Let me finish the question. No, sir. Let me finish it. Let me finish it. Let me finish it. I respond the chairman. Okay. One sentence more. Sir, one sentence more. Point of order. One sentence more. 1 second. Sir, rule 240. Rule 240. 240. Yes. Sir, irrelevance. The chairman, after having called the attention of the council to conduct of a member who persist in irrelevance. सर ये completely जो foreign policy का issue है, हमने regulation से कोई चीज पास करी, पार्लियामेंट में मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जो इनका irrelevant विषय सर पहले वो कार्रवाई से हटाया जाए सर, क्योंकि irrelevant चीज आप डिबेट में नहीं बोल सकते सर, rule is very much clear. Honorable members, it is, I think, third time on the first day, I am required to appeal to you. I seek your cooperation. I have indicated with clarity the kind of anguish, disillusionment which the proceedings are imparting in public at large. More than any other theater of legislature, this theater has to take the lead. This theater has to set standards that are to be emulated by any other center in the country. I would therefore urge you to confine to dignity, decorum, and be in a focused manner. I have carefully gone through every word is spoken by the Honorable Minister, and you will find a spinal strength of the foreign policy which he has articulated in a focused manner. I personally have had the occasion on my 2 visits abroad, the kind of reflections that have affirmatively evoked. I would appreciate that while you raise your concerns, he is the right person to respond to your issues by way of imparting clarification. We must, 1 second, we must also be cognizant that we are dealing with a sensitive issue of national importance that has impact in the country and outside. Your concerns reflected are critical and important. They would be responded. But if there is any diversion, dilution, or some kind of a distraction, that will not be in consonance with the upper house or the House of Elders. I would now call upon Okay. Last sentence. No. Okay, 1 second. Last sentence. Go ahead. Please conclude. If there is no mention in the G20 agenda on the women empowerment and climate change, I withdraw my position. If there is, I ask the government, what you do in Nicobar Islands are anti-environment. Disasters to environment. Kindly stop it. Okay. Lieutenant General Dr. D.P. Watts. Sir, through you, I want to clarify from the MEA. Indian diaspora is the biggest in the world, but still it needs to expand. And lakhs of students, especially with technical know-how, they want to go on work visa, on study visa. What MEA is doing to encourage such technocrats
who want to achieve the know-how, expertise, and be beneficial to us in earning foreign exchange. Sri Syed Nazir Hussain. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, as you know, and most of the members of the House knows, that in last couple of sessions, we have been raising this issue of Indo-China border dispute. And we have been raising this issue through the rule of the House, and on several occasions, it was not allowed to be discussed in the House. I would have liked the External Affairs Minister to have dwelled upon this issue in his statement. It's an important issue, and I wish he not only clarifies today, and I wish he gives a separate statement on the state of affairs on our border. One. Second, sir, I had already written a letter to the External Affairs Minister on South Asian University. He had replied back to me, which was not very satisfactory. I think, though the South Asian countries are involved in that university, since it is situated in India, especially in the national capital, when the students are agitating and the teachers are also involved, and a couple of them happens to be my friends also, my classmates also. So I think that should have been taken up seriously, and it should have been resolved instead of punishing the students. The third issue is, sir, as many of our friends stated, on the issue of Palestine, we have a well-stated foreign policy. Our stand is very clear from last 40, 50 years. I think we should be moving in that direction. There should be more clarity from the days of our freedom struggle. So I think there should be more clarity, and there should be some clarification on that issue also. Thank you so much, sir. Sri A.A. Rahim. Sir, the MD Heroic Aiden is an oil tanker which is currently detained in Nigeria along with its crew. The crew consists of 26 sailors, of whom 16 are Indians. Sir, the sailors has been detained since 8th August. Sir, this is a very aggressive matter. No. I am, see, no. See, so honorable members, this is a concern. Honorable members, Sir, this is a concern. Honorable members, would you please take your seat? Take your seat. Once settle down. I'm here to take care of the situation. If you start dealing amongst yourselves directly, I don't have to tell you the importance and relevance of the chair. What can be more unwholesome? There is a simple method of putting across one second. There is a method where you can put your point very firmly, persuasively, moderately, in any manner you like. It has to be through the chair. And we will be saving precious public time and getting good response by way of input from the Honorable Minister. If there is formulation in precise terms, you raise your point. Thank you, sir. Please. Thank you, He is on legs. Thank you very much, sir. You see, it does not look nice for me on the first day that I suffer these kind of interruptions. I am here to accommodate everyone. I am going to an extreme degree. But that accommodation has to be on rational premise and on some rationale. So don't have interest exchanges. I am the one you have to address. I am the one who has to call upon. Please conclude. Sir, once again, I would like to salute you, sir. Please. Sir, since 4 months, 16 Indians are illegally detained. This is my concern. This is my question. Sir, these 16 parents and families are absolutely they are under panic. So, what are you taking the steps
regarding this issue? This is my question. I already wrote a detailed letter to Honorable Minister, and I hope that the government will take this issue with a serious manner. Thank you, sir. Mr. Vishwadram. Yes, please. Thank you, sir. Sir, here in this document, Minister has very detailed manner. He made the Pravasi Bharat Divas and the programs. So here, I request the Minister for the clarification regarding the government. The government is aware of the number of the Indians in different countries and the number of Indians that their jobs and also how many are lost their jobs in this recent crisis. This thing is, if Minister is ready to explain here, that is very helpful for us. Honorable members, there are no further names. So you should be happy to note that on this issue of critical importance, where the Honorable Minister has imparted his statement, I have given you full operational play. The Honorable Minister. Honorable Minister. Honorable Minister. So I'd very quickly like to respond to the request for clarifications from multiple members, even if they couched it sometimes in a non-clarificatory way. Starting with Shri Amarpat Nayak ji, sir. The question of cross-border digital flows is not a direct foreign policy issue. It is under the domain of my colleague, Meity Minister. It is a matter on which government's views have been put in the public domain for comments. So I think it is obviously something that will evolve as public comments come in and the matter will be pursued. Regarding his second clarification, inequity, will we speak up for Africa? Will we take up Africa's cause and interest in the G20? Absolutely, the answer is an unambiguous yes. Regarding Sir Vaikoji's two questions. One about our abstention in the UN Human Rights Commission. This has been a long-standing position by India, keeping in mind what not just this government, but its predecessor governments have also thought is the most constructive way of addressing and advancing the interests of the Tamil community in Sri Lanka. That continues to be our approach. Regarding the support we have given to Sri Lanka, please, I would request the honorable member to appreciate. We have given support to the entirety of Sri Lanka, which also includes the Tamil community, the Sinhalese community, the other communities. So we have not taken a communal approach to giving support. To have a neighbor in this kind of serious economic situation, we would be shirking our responsibilities if we did not step forward at that moment. And that is exactly what we have done. If I could move on, sir, to Dr. Manoj Kumar Jha's observations. One, he asked, the view of foreign policy is to 2014 centric. I don't think that is accurate. I think if you look at everything that I have said, it is not that, in some way I'm suggesting that what has been a continuing strain in our foreign policy, and I'll come to the Palestine issue, particularly in that context. But since you are asking me, I would say, yes, 2014 was a watershed moment. Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. So I think I'm so glad you picked up the 2014 issue, and I hope you will be supportive of it. On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it. We are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. The issue was also raised about the neutrality
not my word, sir. This was the honorable member's clarification request on the Ukraine situation. And Professor Jha suggested that he could do my job better. I mean, that is certainly he is free to hold that opinion. What I do want to say is we have been clear, publicly clear at the Prime Minister's level that this is not an era of war. We have consistently urged dialogue and diplomacy. When it comes to the impact of the war on Indian people or in the rest of the world, we have also done the right things about that. We have taken measures to soften the impact, whether it is of fuel or whether it is of food inflation, whether it is of fertilizer costs. So if it is your contention that our position has been in putting the interests of the Indian public first, I plead guilty to it. Yes, I put the interests of the Indian public first. It is my duty to ensure that fuel, fertilizer, food, the Indian public does not pay the cost of some other country's actions or some other region's actions. I think that is the way, in my view, at least foreign policy should be conducted. If I could turn then, sir, to Mr. John Brittas's comments. One, the Palestine issue I have already addressed. The pressure from the West, I think I have addressed publicly. I have said again what I have just mentioned. I would like to clarify. We do not ask our companies to buy Russian oil. We ask our companies to buy oil. What is the best option that they can get? Now, it depends on what the market throws up. If tomorrow the market gives us more competitive options, again, please do understand, it's not just we buy oil from one country. We buy oil from multiple sources. But it is sensible policy to go where we get the best deal in the interest of the Indian people. And that is exactly what we are trying to do. Regarding the oil cap, the impact of this is not very clear to us. Our concern is really what would it do to the stability and the affordability of the energy markets. That is a concern. On his clarification regarding diversity in the G20, absolutely yes. I mean, the fact that we are going to celebrate the G20 across the states of India in multiple cities in a manner in which we have never done any international event before. I think that is a greater statement of proof of diversity, of our commitment to diversity that I can make. And it is spread without discrimination across every state of every region of this country. And finally, because again, multiple members asked about this, where on the Ukraine students, some of the students have gone back, some have looked for other solutions. In some cases, the Ukrainian authorities have offered some solutions. So it is a very mixed picture. Unfortunately, there is no clean and simple answer here, but the government is doing what it can in this situation. That was also a concern which Trichy Shivaji raised about the Ukrainian students. If I could turn then, sir, to the clarification sought by Thambi Doreji about the India-Sri Lanka agreement of 1987. It is still an agreement. It is an agreement which has been the basis for changes in Sri Lanka, including provincial councils which have come about as a result. In our view, it is still an agreement that continues to remain the foundation of how both our relationship with Sri Lanka is conducted and how Sri Lanka itself looks at its own future. So I would like to assure him that we continue to, it is very much on our radar. We are very, very supportive of it. Then, sir, if I could turn to the clarification sought by Shri Sujit Kumarji. This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. We
our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. Regarding Shri Pramod Tiwari ji's clarification request on China, and I think Nazir Hussain ji also brought up the same issue. Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. And the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal with, and I think the House should be understanding of the national sensitivity of such a delicate matter. Regarding Binay Vishwamji's issue, I think the Palestinian issue I have addressed, the Ukrainian issue I have addressed, but I think two members, sir, had concerns about the South Asia University. He did, and Nazir Hussain ji did. I would like to assure the members, we would like, obviously, to not see this kind of situation. But the South Asian University is not under the direct jurisdiction of the Government of India or the Ministry of External Affairs. It is something which is run by a collection of countries, and part of the problem is that some of the countries have not made the payments which they were required to do for the university. So the university is going through a period of very severe financial stress. Now, beyond that, there are issues of management and academic freedom for the university, because it is an international university. It is not the policy of the Government of India to interfere in the workings of an international university. But we will, whatever influence and counsel we can give them to sort out any problems in an amicable and non-stressful way, certainly we would do that. On the issue of agenda of G20, yes, women-led development would certainly be high among our priorities, as will be a set of sustainability issues, including, as my own statement said, lifestyle for environment. I think it's not, again, my direct subject. My colleague Bhupender Yadav ji will bear out that at COP27, what we are doing in environment is, I think, today increasingly recognized. I had the privilege, along with him, to be with the Prime Minister at COP26 as well. So I think we should look really at today at how the world sees our contributions and progress when it comes to climate action and climate justice. So I would not take the very pessimistic view which the honorable member has done. Regarding General Wats's point about study visas, we are very concerned that a number of countries, for reasons which have to do with finance and their processes, have slowed down issue of visas. We have taken up with many of these countries. I myself have done at the ministerial level with the US, with the UK. Yesterday, I did it with Germany. In many cases, our intervention has led to an improvement. I still think there is some distance to go, but it is certainly, as I said, we run a people-centric foreign policy in the Modi government, and certainly today, facilitating the faster issue of visas would be very, very high among our priorities. Finally, on the heroic Idum, the ship issue, sir, the one in Nigeria, even though it is not a policy issue, as my colleague recognized, I would like the member to know we have been in touch with the crew since August. It was detained, the people were initially detained in Equatorial Guinea. They were then brought to Nigeria. They are facing charges in court. There are a number of charges, including oil smuggling against them.
We have given them consular support. Our High Commissioner has gone to see them. It is again our endeavor to ensure that they are not unjustly treated, that they have full access to all recourse of law, and that they have the ability to communicate with their family. The last question, the loss of jobs. How many Indians are there abroad? Our estimate is that there are 3.2 crore persons of Indian origin and Indian nationals living abroad. But regarding their job loss figures during the COVID, that is not something, because the data is not maintained by Government of India, so I cannot honestly answer the question. I hope, sir, I have provided full clarification to all the questions. The Wildlife Protection Amendment Bill 2022, Shri Bhupender Yadav to move a motion for consideration of the Wildlife Protection Amendment Bill 2022. Time allotted is 4 hours. Respected Chairman, sir, I move that the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, as passed by the Lok Sabha to further amend the Wildlife Protection Act 1972, be taken into consideration. Honorable members, Honorable Minister, if you like to say about the bill, you may speak. मैं कुछ बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय वन्यजीव संरक्षण विधेयक जो 1972 में पारित किया गया था, उसमें मैं संशोधन के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तावित करता हूं। दुनिया में जो एक विभिन्न देशों के बीच में संधि है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिस प्रकार से वन्य जीव और वन्य संपदा दुनिया में विलुप्त होती जा रही है और कुछ संपदाएं इस कगार पे आ गई हैं कि उनका संरक्षण करना आवश्यक है, इसको लेकर के दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत एक संधि 1976 में हुई थी। हम सब जानते हैं कि वन्य जीवों का जो अवैध व्यापार होता है, उसको रोकने के लिए और उसके साथ ही साथ उसमें रेगुलेशन लाने के लिए हर देश के अंतर्गत नियमों को बनाने का और कानून को पारित करने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार भी इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य है। हालांकि हमारे देश में जो इस प्रकार का अवैध व्यापार होता है, उसको कस्टम एक्ट के तहत, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट के तहत और एक्जिम पॉलिसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। परंतु इस संधि के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए ये कहा गया था कि एक अलग से वन्य जीवों का एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाया जाना चाहिए। मैं कहना भी चाहूंगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये एश्योरेंस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। और चूंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2005 में हमने एश्योरेंस दिया था, पूरा करना आवश्यक है और अतएव इस बिल को लोकसभा में रखा गया है, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल इस राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इस बिल की प्रस्तावना को रखते समय माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 14 से 25 नवंबर 2022 में पनामा में दुनिया में साइटिस की जो कॉप है, वो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। हमारे देश में विशेष रूप से फॉरेस्ट में जो हमारे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट हैं, उनके प्रयासों के कारण भारत ने जो प्रस्ताव किया और हमारे जो 2 स्पीशीज है टर्टाइल, नेमली रेड क्राउन रॉफ टर्टाइल और सॉफ्ट शेल टर्टाइल, उसको एंडेमिक में अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में किया गया। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में शीशम का वृक्ष बहुतायत से पाया जाता है और स्थानीय कारीगर जो हैं उसके द्वारा विभिन्न चीजों का निर्माण करते हैं और हमारे राजस्थान के भी बहुत अच्छे कारीगर इसका निर्यात करते हैं।
हम ये चाहते थे कि ये शीशम निर्यात से पूरी तरीके से मुक्त, इसको जिसको डेल्बर्जियस सिस्को इसका एक बॉटनिक नेम है, हमने इस प्रस्ताव को भी किया, हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ, फिर भी हमको इस बार साइटिस से क्लैरिफिकेशन मिला कि 10 केजी के आइटम तक के निर्यात को हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे और एक तरीके से हमको इस साइटिस में और हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनको एक बड़ी अच्छी राहत भी मिली है। इस बार ये भी अच्छा रहा कि भारत को स्टैंडिंग कमेटी में एशिया रीजन की तरफ से भारत ने अपना स्थान पाया। लेकिन एक और विषय जो टाइगर कंजर्वेशन में, आजकल दुनिया के कुछ देशों में टाइगर की फार्मिंग भी हो रही है और उसके कारण उसका इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है। भारत के उस प्रस्ताव को भी वहां पर रखा गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने पिछले दिनों में अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया का जो 70% जो वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर है वो हमारे देश के अंतर्गत है। अभी हमारे एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ भारत ने 1950 में जो हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे उनको वापस लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको इकोलॉजिकल रॉन्ग जो हमारे देश में हुआ था, इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए कार्य किया है। हमारे देश के जो टाइगर रिजर्व्स है उनको TX2 का अवार्ड भी इंटरनेशनली मिला है। हमारे 16 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है। और कई बार मैं ये कहता हूं कि जब टाइगर कंजर्वेशन की बात हम ये कहते हैं तो कई बार ये विषय उठाया जाता है कि हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अभी मैप रिलीज किया है कि हिंदुस्तान की जो मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में निकलने वाली नदियां है, जो हमारे टाइगर रिजर्व के जो कंजर्वेशन एरिया है, वहीं से उनका उद्गम का स्रोत है और इसलिए उन जंगलों को बचाना, वहाँ की इकोलॉजी को बचाना, वहाँ की इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व एरिया है उसको भारत और बांग्लादेश के सहयोग के साथ बायलैटरल पार्टनरशिप हमने करी है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चीता इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट लायन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से घोषित भी किया गया था और पूरी दुनिया का जो 100% एशियाटिक लायन है वो भारत के अंतर्गत है। हमारे देश में जो रिवर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो हमारा एक संरक्षण का क्षेत्र है, वहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कंजर्वेशन को लेकर भी काम कर रहे हैं। हमारे कई सदस्यों के पत्र भी मेरे को लगातार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लगातार आते हैं। हमारी सरकार के द्वारा फरवरी 2021 में इसको लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया था और उसके साथ ही साथ जो बाकी के विषय हैं उनको भी मैं विस्तार से आपके सामने, जब हमारे सदस्य इस विषय को रखेंगे, मैं आपके सामने विस्तार के साथ रखूंगा। लेकिन इस जो संशोधन है, इस संशोधन को लाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत जो सदस्य बना और अभी हाल ही में जो हमारे भारत का प्रतिनिधिमंडल जाके आया है, उसकी आवश्यकता और भारत के नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए उसको हमारे लीगल प्रोविजन में लाना आवश्यक था। उसके साथ ही साथ जो हमारे वन्य क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जब हम उनका विस्थापन करते हैं तो उनके जो उनके मवेशियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो उनके परंपरागत अधिकार है, उसमें कुछ हद तक कुछ विषयों पे संरक्षण जब तक उनका पूरी तरीके से पुनर्स्थापन ना हो देना आवश्यक था। इस प्रकार की एक संवेदनशील सरकार के द्वारा कि हम वन के विकास के साथ ही साथ वहां पे रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके संरक्षण और उनके विषयों को भी आगे लेकर के चलें, क्योंकि हमारे देश में प्रकृति के साथ रहने की एक परंपरागत सोच है, प्रकृति के साथ जीवन जीने का हमारे यहाँ एक जीवन पद्धति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का जो क्लाइमेट चेंज का जो संकट आया है उसके लिए भी पूरी दुनिया को एक मिशन लाइफ का विजन दिया है। वह विजन भी प्रकृति के साथ
और हम ज्यादातर जिसको माइंडफुल कंजम्पशन कह सकते हैं, माइंडलेस यूटिलाइजेशन की दर है वो है। और इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसमें ये जो संशोधन है, ये आज के समय के अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत भी आवश्यकता है, और कुछ हम अपने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करने के लिए, स्थानीय समुदाय को रियायत देने के लिए हम इन संशोधनों को लेकर के आए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वो सर्वसम्मति से इसको पारित करें। इतना ही कह के मैं इस बिल की प्रस्तावना आपके सामने रखूं। मोशन मूव्ड श्री विवेक तनखा। First of all, this is my first debate before the Honorable Chairman, and I hope the Chairman is still there for the debate. Yeah, it's okay. I thought the safest way to take a respite is when a distinguished member of the same fraternity, a senior advocate, who normally on the first day will have no option but to be indulgent. Sir, before I start, let me give a little brief background of this law. I'm sure most of the members would know this. Sir, this wildlife protection concept was the first time enacted by way of a law in 2012, when we brought Wild Birds and Animal Protection Act 2012. And that continued for many, many years. This power to enact on wildlife was basically reserved for the states. ये state का power था, state legislature का, but with the 42nd constitutional amendment in 1977, this power was transferred to the concurrent list from the state list. Earlier it used to be entry 20 of the state list. Now it is entry 17, 17A, 17B of the concurrent list. So आज के दिन, on this subject, both the state as well as the center can legislate. But if there is an overlapping field, then the state legislation can only come into effect with the assent of the president. That's the law. 1972, before the amendment of this act, the Wildlife Protection Act was enacted. Even though at that time, the power was with the state, because about 11 states passed resolutions at that time that we want a central enactment. This is an all India subject, and this subject is something which has to be addressed nationally. So that is why in 1972, the Parliament, under the constitutional power, made a law in terms of a state subject, which was called the Wildlife Protection Act, 72. इस Protection Act में बहुत सारे amendments हुए बीच में. Now, this is one stage at which broad-based amendments have come. These amendments deal with Rio Treaty also. These amendments deal with many, many conventions. But I think the basic facet of this entire amendment is, as the Honorable Minister said, to fill up the loopholes, to fill up the gaps in the various sections across various chapters. But कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी ओपिनियन में आपसे छूट गई, क्योंकि कितना भी आप concentrate करके law बना लीजिए, if it doesn't go to a standing committee or a select committee, there will always be areas which get left out. So I'm going to basically be speaking on areas जो छूट गए हैं, which are left out. Now, let me start with section 43. Section 43 is the section जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद है इस वक्त. This is the section, sir, in which you permit the transfer and transportation of elephants. ये हमारे गणेश जी हैं, और गणेश जी का transfer और transportation
आपको अगर करना है तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। प्रॉब्लम अरोज बिकॉज जो अभी जो एक्ट इन्होंने प्रोवाइजो लाए हैं, जो प्रोवाइजो सेक्शन 43 पे प्रपोज्ड है, इट सेज this can be done, ये elephant transportation and transfer can be done for religious, वो तो ठीक है, or for any other purpose। और any other purpose section 63 में ये कहते हैं कि हम रूल्स के थ्रू डील करेंगे। Now that has left a big gap। आप any other purpose करके आपने इसको इतना वेग कर दिया है, depending on who is in power, who thinks how, ये चीजें में even touch human sensibility। Elephant has been an issue with the, आपको मालूम है पहले elephant used to be, हाथी एक domestic animal जैसे treat किया जाता रहा under the act। It's only the last 30-40 years that the elephant became an endangered species or a protected species, not an endangered but a protected species। आज problem ये है कि अगर हम elephant को, if we allow elephant to be used for any other purpose, तो उसमें इतने बड़े इश्यूज हो जाएंगे। आपको अंदाजा है 2675 एलिफेंट्स इंडिया में है, 2675, और उनमें 1251 दैट इज 1251 के पास ही ओनरशिप सर्टिफिकेट है अंडर सेक्शन 42। दीज आर पेटा फिगर्स व्हिच आई हैव टेकन सर। द प्रॉब्लम इज आपके पास एक ह्यूज एलिफेंट का कांग्रीगेशन है जिसकी ओनरशिप सर्टिफिकेट्स भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो द प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग टू अराइज इज, अगर आपने इसको, इस प्रोवाइजर को इतना वीक छोड़ा और इतना इंडिटर्मिनेट छोड़ा, तो दिस इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम इन द टाइम्स अहेड। आज तो आप लॉ पास कर देंगे, बट आगे चल के ये एक इशू इस देश में बनेगा। इसी तरह आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोवाइजो है, एक्चुअली इट्स अ प्रोवाइजो टू 43(1). आप अगर सेक्शन देखेंगे, ये प्रोवाइजो एक्चुअली फिट्स इनटू 43(1) एंड नॉट 43(2). वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, but possibly it should have been a proviso to 43(1) and not 43(2). The next point that I would like to make is about section 49M। Now ये बड़ा interesting है सर। 49M में it's you have to give a self declaration, मतलब आपको खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर शेड्यूल 4 के एनिमल्स अगर आपके पोजेशन में है, तो यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए मेरे घर में कोई डियर है या टाइगर कब है या एनी एंडेंजर, वो जितनी स्पीशीज वहां स्पेसिफाइड है, बहुत बड़ी लिस्ट है वो, स्पेशली बर्ड्स की भी बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और हाउ दैट डिक्लेरेशन इज टू बी मेड, वो 49M के बाद बहुत सारे सबसेक्शंस हैं। प्रॉब्लम इसमें दूसरी भी है कि आपने वो तो आदमी व्यक्ति के लिए तो बोल दिया कि ही शुड गिव अ डिक्लेरेशन। द प्रॉब्लम इज दैट आपने थर्ड पार्टी को कंप्लेंट करने का हक नहीं दिया इन अ सेंस। तो अगर हमने सपोज डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो एक्ट में कॉन्ट्रवेंशन होगा। कॉन्ट्रवेंशन में पनिशमेंट होती है अंडर सेक्शन 51। दैट वो किक स्टार्ट तभी होगा जब कोई फॉरेस्ट अथॉरिटी उसको डिस्कवर करेगा। सर, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, सिल्वर आर्च, आज से 10 साल पहले वहां ऑस्ट्रिच मिली थी। सालों से वो ऑस्ट्रिच वहां रहती थी। सडनली एक दिन डिस्कवर किया गया कि ऑस्ट्रिच वहां किसी ने पाल के रखी है। that is an animal or species that has to be declared। तो somewhere एक ये प्रोविजन भी अगर आप करें, it might help in the declaration process कि थर्ड पार्टी जिसको नॉलेज है, नेबरहुड में जरूर नॉलेज होता है कि आपके नेबर के पास कौन से एनिमल्स हैं, और नेबर जरूर जाके बता सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दैट सर इनके पास ये है और इसके लिए ही मस्ट बी आस्क्ड टू डिक्लेयर। तो कुछ ये प्रोविजंस को अगर आपको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है, तो आपको पॉसिबली पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इसमें इनकरेज करना पड़ेगा। इसी तरह एक इशू है अबाउट
entry of issue of every national park and sanctuary. Now, this is something जो आपको completely आपने miss कर दिया. Sir, there is what you call a 1 kilometer eco-sensitive zone rule. ये 1 kilometer eco-sensitive जो zone rule है, ये सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट से आया. अब क्या हो गया? द सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 नवंबर को एक ऑर्डर किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंबई के पास है, दैट this 1 kilometer eco-sensitive rule will not apply as it is. मतलब it is flexible. इसके पहले on 28 September also सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया था, तो सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क and Thane Creek Flaming Sanctuary, it had relaxed this rule. अब आपने as a parliament, you have this opportunity. You have an opportunity to amend. इस issue को आपने deal नहीं किया. अब problem ये है कि ये this will now go by judicial verdict, case by case. National parks के पास जिनको issues आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. गोदा वर्मन की एक परमानेंट बेंच चलती है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर उससे परिचित भी हैं, वहां आप एप्लीकेशन लगाएंगे और वो फिर रिलैक्स करेंगे. 1 किलोमीटर के अंदर से इको सेंसिटिव जोन में रिलैक्स करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, किन चीजों के लिए किया जा सकता, क्या यहाँ होटल आ सकते हैं, होटल आएंगे तो किस प्रकार के होटल आएंगे, क्या यहाँ पर वेलनेस सेंटर्स आएंगे, जो भी करना है इको सेंसिटिव जोन में आप जो भी करेंगे उसको आपको इको सेंसिटिव वे में ही करना पड़ेगा. तो उसके भी रूल्स बनने, उसके बारे में भी सोच होनी चाहिए थी. तो एक बहुत बड़ा एरिया जो कि एक अपॉर्चुनिटी थी टू एड्रेस, ये इस वक्त इनसे मेरे ओपिनियन में छूट गया है, बिकॉज ये एरिया इज नाउ बीइंग डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट रादर देन द पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बिकॉज इको सेंसिटिव एरिया जो है इसका इट इज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. सर, हमारी जो नेशनल हेरिटेज है उसका वो पार्ट है. हम पूरा जो हेरिटेज है 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि हम चीजों को खराब ना होने दें, हम चीजों को बिगड़ने ना दें. दूसरा होता है पॉल्यूटर पेज, जो व्यक्ति इकोलॉजी को खराब करता है उसको आप दंडित करते हो. यू टेक फाइन फ्रॉम हिम, यू टेक पेनल्टीज फ्रॉम हिम एंड मेक इट सो सिवियर दैट ही विल नॉट डू इट अगेन. एंड थर्ड इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी. मतलब हम ये जो सब कर रहे हैं, राइटली सो, एज द ऑनरेबल मिनिस्टर सेड, हम ये ऑल वी आर डूइंग दिस ऑल फॉर द फ्यूचर. ये हम अपने आगे वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं. एंड एज ही राइटली सेड, टाइगर फार्मिंग इज अ कॉन्सेप्ट Southeast Asia में, it's a concept which thousands of people go and enjoy. वहां पर tigers are tamer than dogs. I mean, आपके Indian dogs are more ferocious than a Thailand tiger. तो as I said, wildlife का concept भी change हो रहा है, ecology का concept भी change हो रहा है. Wildlife is also now a revenue earning machine. कई African countries through wildlife, this is that main economy. Then असली जो पूरा उनका जो earning है is out of that wildlife. तो हमको उसको भी ध्यान में रखना है, हमको अपनी इकोलॉजी को भी बचाना है, हमको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रख के ही इस चीज को आगे बढ़ाना है. तो जितना एग्रेसिव हम इस चीजों को, but this aggression has to be a very consultative aggression. It can't be an aggression जिसमें आप किसी चीज को रोक दो. I still remember, हम तो गोदावरमन केस में, I was appearing for years as counsel for Madhya Pradesh, and हम लोग की तो सबसे ज्यादा applications वहाँ pending होती थी. मेरा शहर जबलपुर कि all around eco sensitive parks हैं. There's Kana on one side, बांधवगढ़ on one side, Pench on another side. आप जहाँ जाएं उस सब तरफ हमारे ये सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी अर्निंग का जरिया बन सकते हैं. तो as you rightly said, sir, that it is correct that law amendments are necessary, but when we make these laws, we also should not lose opportunities which the law gives us to make an intergenerational future.
क्योंकि हम जो लॉ आज बना रहे हैं, this is not only for us, it is also for the future. Our children are going to enjoy this law. Not only the law, the environment of which creates out of this law. तो मेरा यही कहना है, while nobody will be objecting to this bill per se, but there are so many gaps in this bill, whether it be 43, 43M, and this Supreme Court judgment which has not been taken into consideration. I would like the minister to take these facts into consideration before finalizing the bill, so that at least when you finalize a thing, you have a comprehensive picture before you. Thank you, sir. Thank you, Mani Vinay Tankha ji. Dr. Kani Moji, please. Honorable Chairman, sir, wildlife wealth is the world's natural wealth. The protection and conservation of wildlife is the need of the hour and is one of the most important duties of the government and people to protect our wildlife wealth. Sir, the Wildlife Protection Amendment Bill amends the Wildlife Protection Act 1972 and seeks to increase the species protected under the law and implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Sir, the human population has grown exponentially over the past 200 years to more than 7 billion people today, and it continues to grow rapidly. This means the natural resources are being consumed faster than ever by the billions of people on the planet. This growth and development and also endangers the habitats and existence of the various types of wildlife around the world. So humans are being the current rate of species extinction, which is at least 100 to 1,000 times higher than the nature intended. According to the WWF's Living Planet Report 2018, the world has witnessed an astonishing 60% decline in the size of populations of mammals, birds, fishes, reptiles, and amphibians in just over 40 years. In a healthy biome and biodiversity, world humans are the culprits. Their greed for development and advancement has made detrimental to the world wildlife. Therefore, any law which is aimed to protect and conserve wildlife population is absolutely necessary. So there is a conflict of interest between Forest Rights Act and the Wildlife Protection Act. Protection of wildlife is important. At the same time, protection of the forest rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers living near the protected wildlife zones. A near total ban on grazing, coupled with the system that undo the FRA has made life difficult of locals, stripping them their rights. Sir, cattle grazing has been recognized under the Tamil Nadu Forest Act 1882. The court then revised its order on March 17th. Now cattle grazing became legally permissible in forests outside tiger reserves, sanctuaries, and national parks. In effect, the verdict removed 8,101.79 square kilometer or 35.42% of forests and 6.23% of the state total's area from Tamil Nadu grazing area, even from those who were illegitimate right holders. The court thus rewrote the provisions of two major laws that the Parliament has enacted in 2006, the 2006 Amendment to the Wildlife Protection Act and the Wildlife Protection Act of 1972, rendered tiger reserves a statutory category and prescribed provisions for the notifications. The government has since notified 52 tiger reserves, both of which were designed to protect, preserve, conserve, and manage forest, wildlife, and biodiversity. According to the Wildlife Protection Act, Tamil Nadu has to prepare a tiger conservation plan to protect the agricultural, livelihood, developmental, and other interests of the people living in the tiger reserves. The core area, the critical tiger habitat, is to be established without affecting the rights of the scheduled tribes or such other forest dwellers, while the buffer area should promote coexistence between wildlife and human activity with due recognition of livelihood, development, social and cultural rights of the local people. Separately, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognize grazing and traditional seasonal resource access of nomadic communities. That is, it accorded community rights to the village to be regulated by its Grama Sabha and not an individual grazing permit to be granted on payment of the prescribed fees by the forest department. This has to be followed without any hindrances to the tribal population and traditional forest dwellers.
Sir, in the vast country like our India, different regions will have different wildlife population. The wildlife species living in Western Ghats are not expected to be seen in the Aravalli ranges of the north. The wildlife in the northeast India is much different from those in the Eastern Ghats. Therefore, the state governments are better equipped to act upon the wildlife protection and conservation. I urge the union government to have a consultation with the state governments in forming the management authority and to provide adequate representation from the states in the composition of the authority. Sir, the pristine environment of the forest are deteriorating due to the unregulated tourism. Untreated sewage and plastic wastage have endangered the environment. Only if the people realize the importance of the clean environment and cooperate with the local administration, the natural resources can be protected. In Tamil Nadu, the Eastern Ghats and the Western Ghats are natural boon to protect fauna and flora typical to this weather and environment. We have tremendous coastal and marine habitat. Therefore, in protecting the wild life, Tamil Nadu plays an important role. For DMK government in Tamil Nadu, several wildlife sanctuaries and wildlife park, zoos, bird sanctuaries have been established in Tamil Nadu over the last 50 years. The project Save Tigers and Save Elephants have been successfully implemented in Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the best served countries in the countries as far as the wildlife protection is concerned. I take this opportunity to urge the union government to provide rupees 2,000 crores for the government of Tamil Nadu for enhancing its wildlife protection and conservation activities. With this, I conclude. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji. Mani Brijlal ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I thank you for giving me opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, which proposes to amend the Wildlife Protection Act 1972 so as to incorporate the necessary changes to appropriately implement CITE, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in India, that is called CITES. In addition to this, certain other amendments have also been proposed so as to make the Act more comprehensive. Deputy Chairman, sir, India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which requires the parties to take appropriate measures to enforce its provision and prohibit trade in violation thereof. CITES regulate trade in over 38,700 species of wild animals and plants. Currently, 183 countries are signatory to CITES. Non-compliance by a country to adopt appropriate legislation to implement CITES may result in a recommendation from CITES to suspend trade in CITES-listed species with such country. Such a recommendation was made in respect of India, as a minister told, in 2004, but was withdrawn in March 2005 following an assurance by India. India has been implementing CITES through the Custom Act 1962, Foreign Trade Development Regulation Act 1992, the EXIM policy, and the Wildlife Prevention Protection Act 1972. However, the CITES Secretariat has noted certain gaps in India's implementation of the CITES. India has been identified by the CITES Standing Committee as one of the parties requiring attention as a matter of priority regarding the national legislation. A recommendation to suspend trade with India for CITES listed species would affect
India's export and imports, such as species including agarwood, sesame, red sandalwood, wood, medicinal plant, aromatic plants, etc. अभी मंत्री जी ने कहा कि एक प्लांट हमारे यहाँ डलवर्जिया लेटिफोलिया जिसको हम रोज वुड कहते हैं कि ज्यादा इसका प्रोडक्शन केरला वहाँ होता है, कर्नाटक में, हरियाणा में, और इसके प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं और ये साइट की लिस्ट में है। अगर हमने लेजिस्लेशन ना किया तो वो हमारा प्रोडक्ट जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं वो सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह से द अदर स्पीसीज which is in the site list is called agarwood. इसको ऊद भी कहते हैं। अभी मैं होम अफेयर कमेटी को लेकर गया था असम और वहां मैंने इस पर बातचीत की, क्योंकि अगरवुड वहां होता है, उसमें एक इन्फेक्शन होता है, मोल्ड डेवलप होता है और उसके बाद उसका हार्टवुड टर्न्स ब्लैक और उसके बाद रेजिन होती है, उससे ऑयल निकलता है एंड दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड दैट इज यूज इन परफ्यूम एंड इंसेंस। तो ये हमारा जो है और इसका ग्लोबल ट्रेड है 6 to 8 बिलियन US$। तो ये प्रोडक्ट हमारा अगर हमने नहीं किया तो ये हम उस श्रेणी में आएंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है इससे प्रभावित होगा। महोदय, मैं असम के मुख्यमंत्री को इस हाउस के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं। उन्होंने अभी 26 जून he has launched एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इसका पर्पज यह है कि फार्मर्स वहां ऐसे स्पीसीज ग्रो करें जिसका यूज इंडस्ट्री में हो। उसमें अगरवुड भी है, उसमें शीशम भी है, उसमें बम्बूज है, कि ऐसे प्रोडक्ट हों और इस प्रोडक्ट को किसानों को उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और इससे फ्यूचर में असम के किसानों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें काफी फायदा मिलेगा। इसलिए ये लेजिस्लेशन जरूरी है कि जिससे साइट जो पाया सम गैप्स हैं उस गैप्स को हम पूरा कर सकें। महोदय, इसी तरह से हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है जिससे हम काफी पैसा कमाते हैं और वो है रक्त चंदन। ये आंध्रा में होता है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। मेनली इसका यूज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिनल पर्पजेस। जब मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर जो नेपाल बॉर्डर पर है, करीब 2-3 ट्रक हमने उसको पकड़ा था। उसका वहां कोई यूज नहीं है, केवल पर्पस था वहां से नेपाल और नेपाल के थ्रू चाइना। तो ये रेड सैंडर जो है जिसको हम रक्त चंदन कहते हैं, इसका भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं और अनलेस ये लेजिस्लेशन पास नहीं होगा तो इस पे एक्सपोर्ट पर भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। महोदय, in nutshell, the bill seeks to include provision of site regulation in the Wildlife Protection Act 1972 in order to control illegal trade in wildlife, their parts and products. Number 2, it also envisages to constitute a standing committee of SBWL, State Board of Wildlife, rationalize the schedule in the Act from current 6 schedule to 4 schedule, and second for protected animal species, schedule 3rd for specified plants, and schedule 4 for site listed species. In the amendment, the monetary penalties for contravention of the provision of the Act are proposed to the increase so as to ensure that it function as a deterrent in present times. महोदय, इसमें इस एक्ट में बात की किया गया है अबाउट इन्वेसिव फाउना एंड फ्लोरा। हम बड़े अच्छी तरह से परिचित हैं, एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ,
जलकुंभी। और ये कहाँ आया? करीब 1774 के पास आया। और ये लेडी हेस्टिंग्स कलकत्ता में लाई थी और उनको उसके बैगनी फूल बड़े खूबसूरत लगे, चमकीले पत्ते ले आए और लग गया। आज केवल भारत नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए जलकुंभी एक प्रॉब्लम हो गई है। और मैं तो डल झील में गया था, कश्मीर, वहां भी है। तो आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस इन्वेसिव प्लांट से, और आज चाहे नॉर्थ इंडिया हो, एटलीस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया तो देखा ही है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह जितने हमारे वाटर बॉडीज थी, गांव में जो तालाब थे, वो पट गए हैं जलकुंभी से। और तमाम जो हमारे किसान उसमें से खेती करते थे, तमाम प्रोडक्ट उसमें से पैदा करते थे, मछली पालन करते थे, सिंघाड़ा पैदा करते थे, वो खत्म। हमारे कुछ बंगाल के मित्र हैं जिनको मछली बड़ी पसंद थी, मागुर मछली और सिंगी, आज गायब हो गई हैं क्योंकि ये बहुत कम रह गई है। तो ये जो है इन्वेसिव प्लांट जो है, तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि कोई हम इन्वेसिव प्लांट को ना ला पाए, उसको अगर लाते हैं उसके सजाओ। महोदय, इसी तरह से इस प्लांट को बंगाल में कहता है टेरर ऑफ बंगाल। इसी तरह से इन्वेसिव प्लांट के बारे में है लेंटाना कैमरा, ये भी साउथ अमेरिका से आया था और आज हमारे फॉरेस्ट में इट हैज क्रिएटेड हैवक, चाहे वो कर्नाटक हो, बांदीपुरम सेंचुरी में। और जब गर्मी आती है तो सूख जाता है, फायर लगता है, और कर्नाटक में फायर से हजारों एकड़ जो फॉरेस्ट था वो जल गया, जिसमें बांदीपुर सेंचुरी का भी 40 हेक्टेयर लैंड था। तो ये भी एक लेंटाना कैमरा जैसा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज हैं, जो फॉरेन स्पीसीज आई, जो हमारे देश की नहीं थी और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसका भी प्रोविजन है और उसके लिए सीरियस पनिशमेंट का प्रोविजन दिए गए हैं, जिसके माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्थेनियम, जिसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास, इसको ये जो इसको गाजर ग्रास, ये आया था PL 480 से 1954। जब हमारे पास खाने को नहीं था, हम लोग पास अनाज नहीं था, तो अमेरिका से इंपोर्ट होता था अंडर पब्लिक लॉ 480, और उसी के तहत ये प्लांट आया। और आज ये हालत है, किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लखनऊ में अपने घर के सामने मैंने गार्डन लगाया, मैं रोज सफाई करता हूँ, फिर उगाता है। तो ये भी इन्वेसिव प्लांट है। तो इसके लिए प्रोविजन है कि साहब इन्वेसिव प्लांट्स, चाहे फाउना चाहे फ्लोरा। इसके बाद तो अपनी बात थोड़ी मैं कह करके समाप्त करूंगा अबाउट इन्वेसिव फाउना। आप देखते होंगे आज बाजारों में, जो मार्केट में आप जाएंगे तो थाई मांगुर बहुत मिलता है। थाई लैंड मांगुर के बारे में यह है, इट ईट्स एवरीथिंग इन द रिवर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। पहले लोगों ने इसको तालाबों में पाला, वाइल्ड में गया, और वाइल्ड में इसकी 6 महीने में इसकी साइज 3-4 किलो हो जाती है, जबकि हमारा देसी मांगुर 250-300 ग्राम का होता है। और आज इसकी वजह से जो तमाम हमारे जलीय जीव थे, हमारी ट्रेडिशनल मछलियां थी, इंडियन मेजर क्रॉप्स, कार्प्स, रोहू, कतला और ये मृगल, नैनी, ये सब गायब होती जा रही हैं। तो इसी का परिणाम है इन्वेसिव एनिमल का भी। इसी तरह से इन्वेसिव दूसरी मछली के बारे में कहूंगा, और उसका नाम है तलपिया। तलपिया ये अफ्रीकन फिश थी, और ये आई अफ्रीका से नहीं आई, ये हमारे यहाँ थाईलैंड और लंका से आई, और ये आई करीब 1960 के आसपास। और आज तलपिया का ये हालत है कि हमारी जो देसी मछलियां, चूंकि कई बार ब्रीड करती है, और ये ब्रीड करने के बाद आज जो हमारी देसी मछलियां हैं जो नदियों में हैं, उसको पूरी तरह से ये रिप्लेस कर। तो मंत्री जी को मैं इस पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके लिए भी प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। महोदय, कुछ चीजें अंत में बात करके मैं बात समाप्त करना चाहूंगा अबाउट द वर्मिन स्पीसीज। वर्मिन स्पीसीज आप सभी परिचित हैं, नील गाय। इट इज नॉट अ गाय, इट इज नॉट फ्रॉम ए वाइन फैमिली, इट इज ए एंटीलॉप। इसी तरह से वाइल्ड बोर, तो इसमें प्रोविजन है
वर्मिन डिक्लेयर करने का। लेकिन अभी जो तमाम है कि परमिशन मिल जाएगा, तमाम फॉर्मेलिटीज हैं जिससे उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में जो वर्मिन स्पीसीज हैं उसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को जो खेती का नुकसान हो रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय ब्रिजलाल जी। श्रीमती सुल्टा देव, मेडन स्पीच। नमस्कार ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मुझे इस बिल के जरिए कुछ बोलने के लिए देने के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था रख के मुझे इतने बड़े सदन में भेजा, जो अगस्त हाउस में, जहाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ। सर, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसा टर्म है, बस आदमी ही नहीं है वसुधैव कुटुंबकम में, इसमें मेरे ख्याल से पशु भी है, पेड़ पौधे भी है, नदी नाल भी है, सब कोई है। इस वजह से क्या होता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका केयर करना चाहिए, हम लोग को सबको हमको बांध के रखना चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले डिस्कशन नहीं हुआ या इससे पहले नियम नहीं बना। नियम भी बना है, कानून भी है, मगर तब मुश्किल होता है जब नियम को हम लोग पालन नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो जितना भी कड़े से कड़े नियम बनाया जाए, नियम हम लोग बनाते हैं, लोकसभा में भी डिस्कशन करते हैं, अपर हाउस राज्यसभा में भी करते हैं, विधेयक आता है, फिर पास होता है, फिर नियम बनता है, मगर हम लोग जो है, जो नीचे पालन करने वाले हैं, वो उसको पालन नहीं करते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पालन करना सिर्फ उसको देख रेख करना, मतलब वो जो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है कि ये है, जो हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य रहता है। जो ह्यूमन है, हम सबको लेके चले। भगवान ने जब ह्यूमन बनाए, जब आदमी बनाए, वो इतना सोच समझ के बनाए कि ये सबसे बुद्धिमान जीव है जो सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है हम लोग के लिए बहुत पहले से, मैं अगर आपको उदाहरण दूंगी तो बहुत पहले से भी देखा जाए तो ये नियम है, क्योंकि हमारे सारे भगवान जो है ना, वो किसी किसी एनिमल और पक्षी पशु से जुड़े होते हैं, वाहन के तरफ से। वाहन हम लोग उनको बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, उनको लगता था कि सारे पशु पक्षी कहीं ना कहीं अगर विलुप्त ना हो जाए, इसके वजह से वो लोग भगवान के साथ में उनको जोड़ के रखते थे, उनके वाहन के, क्योंकि जब हम लोग उनको पूजा करेंगे, कम से कम हम लोग उनको नहीं मारेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बस पशु पक्षी रहते थे, कितने पेड़ पौधे भी हैं जो हमारे जो पूजा पाते हैं, जैसे नीम है, जैसे बेल है, जैसे तुलसी है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी है। इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे करके हमारा जंगल को रखे, हमारे पेड़ पौधों को रखे, और हमारे जो एनिमल्स और पक्षी है, रेप्टाइल्स है और मामाल से, सबको हम कैसे केयर में रखें। हम लोग उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। ये उड़ीसा जो है, हम लोग को आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे 19 सेंचुरीज है, 2 नेशनल पार्क्स है, 2 टाइगर रिजर्व्स है, 3 एलिफेंट रिजर्व्स है, एक बायोस्फीयर भी है। और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको टाइगर भी मिलेगा, आपको एलिफेंट भी मिलेगा, आपको ऑलिव रिडले भी मिलेगा, और आपको इरावदी डॉल्फिन भी मिलेगा चिलिका में। जो चिलिका लेक होता है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट लेक होता है, जो ओडिशा में, जहां अभी भी अगर चलेंगे तो वहां पर लाखों के हिसाब से अगर देखा जाए माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, कैसे करके वो वहां पर जो 4 महीने के लिए आते हैं, बहुत सारे
हमारे सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने वहाँ पर गार्ड्स रखे हैं, लोकल पीपुल जो है उन लोगों को भी रखे हुए हैं। किस तरह से उनको ठीक से कोई मारे नहीं, कोई खाए नहीं। जो बोल रहे थे अभी एक भैया हमारे, जो मेडिसिन के लिए भी कुछ लोग पक्षियों को मार देते हैं, कुछ पौधों को भी मार देते हैं, उनको जगने के लिए हमारे पास में बहुत सारे हैंड्स भी है। अगर देखा जाए हमारे पास में बस ये नहीं है, इरावदी डल्फिन के अलावा हमारे पास में क्रोकोडाइल भी है, जो स्वीट वाटर क्रोकोडाइल है, मगर और घड़ियाल बोलते हैं। और क्रोकोडाइल जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको हम बोला बोलते हैं, जो बोला कुंभीर है, वो हमारा मास्कट था, गौरी मास्कट भी था। अगर देखा जाए जो भारत क्या पूरे विश्व में मिलानेस्टिक टाइगर जो है ना, हमारे यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ सिमलीपाल है वहीं पर मिलते हैं। और हम लोग देखते हैं जो ऑलिव रिडले है, इस साल 5 लाख ऑलिव रिडले का जो नेस्टिंग होता है वो प्रजनन प्रक्रिया में ऋषिकुल्या में भी हुआ, और गहीरमथा में भी 5 लाख ऑलिव रिडले ने अपना अंडा दिया। और उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर लोकल कमिटीज बनाए हुए हैं कि इस तरह से उनको प्रोटेक्शन में रखे, कैसे उन लोग को ठीक से रख सके और ठीक से उन लोग समुद्र में जाए। उस टाइम में फिशिंग करने के लिए भी मना किया गया है गवर्नमेंट से। बहुत सारे काम है। वही मैं बोली, एशिया का जो सबसे बड़ा लेक चिल्का लेक है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे प्रजाति का भी आप लोग को मिलेगा वहाँ पर। इसलिए उनका भी अभी बोल रहे थे, जो जलकुंभी है ना, जो डाल लेक में दिखाया जाता है, वो जलकुंभी हमारे चिल्का लेक को भी प्रदूषण कर रहा है। कुछ ना कुछ करके सबके लिए वहां पर वो व्यवस्था बनाना चाहिए, कैसे वो जल कुंभी को समूल विनाश कर सके। जैसे कि सारे जो वहां पर जो मछली है, जो कुछ है, जो वो रेप्टाइल्स है, वो सब कैसे आराम से रह सके। अगर देखा जाए, यहाँ हम एक जरूरी बात बोलेंगे कि 2002 से 2022 में हम लोगों का जो फॉरेस्ट कवर एरिया था, उसको अगर देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया हम लोग का बड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 48,000 स्क्वायर किलोमीटर था, अभी 58,000 स्क्वायर किलोमीटर बना है। अगर ये मैं नहीं कह रही हूँ या उड़ीसा सरकार नहीं कह रही है, ये अगर देखा जाए ये रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये हिसाब से हमारा फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है। इससे सोचिए हमारा गवर्नमेंट कितना काम कर रहे हैं, कितना प्लांटेशन हो रहा है, जिसके वजह से फॉरेस्ट लैंड भी बढ़ रहा है। और यहाँ देखा जाए तो हम अभी आएंगे ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जंगल भी है हमारा, एलिफेंट रिजर्वर भी है, सब है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी क्या होता है ना, कभी कभी एलिफेंट का भी डेथ होता है, कभी कभी ह्यूमन का भी डेथ होता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक ऐप बनाया है जिसको अनुकंपा मोबाइल ऐप बोलते हैं। अनुकंपा मोबाइल ऐप से हम लोग कितने जल्दी एसग्रेसिया मनी जो होता है, वो जो विक्टिम होते हैं उनको दिया जाता है। इसके लिए शायद उड़ीसा ही पहला स्टेट है जिसमें अनुकंपा मोबाइल ऐप बनाया गया है। अगर देखा जाए, ये जंगल जो है और ये कंकरेंस लिस्ट में आता है। इसमें स्टेट के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहभाग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक टाइम से ठीक से पैसा जाएगा, ज्यादा अमाउंट जाएगा, प्रोजेक्ट जो जंगल का प्रोजेक्ट होता है उसमें जो हाथी रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लोग गार्ड्स रहते हैं, उनके लिए अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो कम से कम हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा लाइफ भी दे सकते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग को देखे हैं गवर्नमेंट का जो, जैसे हमारे पास अभी भारतवर्ष में 30,000 के करीब हाथीज है, एलिफेंट्स है। अगर देखा जाए तो जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उस हिसाब से टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने के लिए पहले अगर देखा जाए, एलिफेंट टैक्स फोर्स, इसको पहले 2010 में एक प्रपोजल दिया था
पता नहीं क्यों वो प्रपोजल के हिसाब से कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ सोचे नहीं। ये बड़ा दुखद की बात है, क्योंकि हम लोग अगर टाइगर के लिए करते तो हम लोग को एलिफेंट के लिए भी करना चाहिए। अगर देखा जाए तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से जो पैसा खर्चा होता है, अगर देखा जाए तो इस साल 300 करोड़ का बजट आया है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए, मगर पिछले साल जो था वो 350 करोड़ का था। इस साल थोड़ा कम हुआ है। 350 करोड़ जिस टाइम था, 1400 टाइगर को बढ़ा के वो लोग 3000 टाइगर कर चुके हैं। मगर अगर पैसा अगर कम होगा तो सभी कभी ना कभी टाइगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये देखा जाए तो हाथी भी इतना है, मगर इस बार हाथियों के सुरक्षा के लिए, हाथियों के लिए खर्चा करने के लिए 35 करोड़ ओनली दिया गया है, बट लास्ट टाइम उसके लिए 70 करोड़ दिया गया था। ये जो 35 करोड़ का भी हम लोग बोल रहे हैं, ये शायद अभी तक मैं तो सितंबर में भी बात की थी, सितंबर तक भी हमारा जो सब बजट था वो बजट नहीं पहुंचा था। अगर बजट भी जो जितना, एक तो कम बजट होता है, अगर दूसरे देखा जाए अगर बजट इन टाइम में नहीं पहुंचेगा तो सबके लिए फिर भी प्रॉब्लम होता है, काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, 18-19 में 350 करोड़ बजट था, और तभी व्याघ्र जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बढ़ के बहुत ज्यादा हुआ था। इस हिसाब से अगर देखा जाए जो ट्रेन और हाथी और टाइगर के हिसाब से ट्रेन लाइन में आपके सबके नजर में आया होगा, ज्यादातर हाथियों का डेथ हो जाता है ट्रेन लाइन से कट के। हम लोगों को उसको बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए, किस तरह से कि वो जो उनके जो यातायात का रास्ता है उनको किस तरह से अंडरपास बनाना चाहिए। जो हमारा देहरादून का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ना, वो इसके विषय में प्रपोजल भी दिया था। अगर देखा जाए पेंच टाइगर रिजर्व जो आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस तरह से अंडरपास किए गए हैं, NHI दोनों स्टेट मिलकर, वहां पर देखा जाए तो टाइगर को भी सेफ रखा जा सकता है। इस तरह से अगर उड़ीसा में भी NHI के जरिए अंडरपास, जहां जहां हाथी के ऊपर ट्रेन, हाथी जाने आने का रास्ता है, वहां पर अगर हम लोग NHI के हिसाब से, NHI से मिलके गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उसको सपोर्ट करेगा, और उस वहां पर अगर अंडरपास बनाया जाता है तो कम से कम जो हाथियों को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। और एक बात है, ये जो हाथी है ना, हाथी क्या होता है ना, जो झारखंड हम लोग हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा में ज्यादातर दिखाई देता है। इसके वजह से झारखंड में जो डलमा है एरिया, वो डलमा अंचल का अंचल से, वो एरिया से पश्चिम बंग होते हुए बांकुरा और मेदिनीपुर से बहुत सारे हाथी उड़ीसा में चले आते हैं। अगर देखा जाए वो मयूरभंज जिला है, जो हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जिला है, अगर वहां दिखा जाए मयूरभंज में रास गोविंदपुर और बेतनटी रेंज जो उसमें, और देखा जाए तो बालेश्वर की जड़ेश्वर और निर्गिल रेंज में ज्यादा से ज्यादा हाथी वहां पर आते हैं, वो सारे खेती बाड़ी नष्ट कर देते हैं। किसान बेचारा क्या करे? अगर देखा जाए जो वो फसल लगाता है, जब वो काटने का वो बोता है कितने मुश्किल से और इतना परिश्रम करता है, फिर उसका सब कुछ परिश्रम खत्म हो जाता है जब हाथी आकर उसका जो सुनहरा फसल है उसको सारा नष्ट कर देते हैं। वो मेरा ये सुझाव है, अगर बिल में इतना सारे सब काम है तो देखा जाए तो हाथी को पहले देखना चाहिए कि वो क्यों अपना जो स्थान है वो छोड़कर दूसरा स्थान जाता है। शायद वहां पर उनको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनका खाने के लिए अगर प्रावधान वहां पर करना चाहिए जो डलमा में, और वहां पर अगर क्या पानी है, पानी कम है या खाना कम है, किस तरह से वो लोग वहां से निकलकर वेस्ट बंगाल के जरिए फिर हमारा उड़ीसा आते हैं और खराब होता है सारा चीज, उसको देखना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि वहां पर कैसे उन लोगों को रखा जाए। पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ एक सर्वे भी होना चाहिए। पहले हाथी लोग कितना दूर चलते थे खाना खाने के लिए, अभी हाथी कितना दूर चलते, इसका मतलब कहीं खाने के लिए कम होता है उनके आसपास। और ऊपर से अगर हाथी लोग चलते रहते हैं, जो जो स्टेट होके वो लोग जाते हैं,
उन स्टेट को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए, जो जंगल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जब हाथी आते हैं चल के, वो भी खाना खा के भी चले जा सकते हैं, मगर हम लोग उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जो जब जहां मिल जाए उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा तो कम से कम छेड़खानी नहीं होगी। हाथी लोग अगर आएंगे भी वो अपने रास्ते से भी चले भी जा सकते हैं। ये बहुत सारे ये है, मगर हम लोग की स्टेट में हम अभी भी बोलते हैं कि स्टेट में हमारा जो बिजू पटनायक के नाम से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके नाम से हम लोग उनको अवार्ड करते हैं। कम से कम ऐसा अवार्ड होना चाहिए सारे भारतवर्ष में, जो आगे बढ़ के जो लोग वाइल्ड लाइफ को और फोना और फ्लोरा को जो लोग प्रोटेक्शन देंगे उन लोगों को अवार्ड होना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे फ्लोरा और फोना को भी हमारा प्रोटेक्शन के साथ साथ सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी बोल रहे थे गाजर घास, हमारे यहाँ भी गाजर घास दिखाई देता है। जो गाजर घास सारा जमीन का है ना, जो खेती होता है वो सारे जमीन के खेती को नष्ट कर देता है। ये हमारा हमारा शेड्यूल एरिया, हाँ हम एक मिनट में साथ, जो शेड्यूल एरिया दिया गया है बहुत सारे अच्छे विचार भी है इसमें। जैसे आर्म्स का जो रिन्यूअल होने के लिए 5 किलोमीटर था, वो भी 10 किलोमीटर क्या दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। मगर जो खेती होता है, जो किसानों का जो नुकसान होता है ना, उसके भरपाई के लिए मैं तो इसमें चाहूंगी, गुजारिश करूंगी, थोड़ा अच्छे से अगर आप कंपनसेशन दे दे, कम से कम किसान भी बच जाएगा और जानवर भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, जानवर भी नहीं मरेगा। और हमारा जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम सबको मिलके बचाना है। ये हम सबका दायित्व है और ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का भी है, हमारा भी है। हमारा सरकार कर रहा है, उड़ीसा सरकार। मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार का हाथ अगर आगे थोड़ा आए तो हम लोग और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद श्रीमती सुल्टा देव जी। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी। Sir, I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Positives of this bill. The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provisions of the Act. The bill increases these fines from up to 25,000 to up to 1 lakh rupees for a general violation and 10,000 rupees to 25,000 for a specially protected animals. Such a provision is a good step towards reducing incidences of poaching, cruelty towards animals, or any other related violations. Implementation of sites. This bill aims to implement the Convention on International Trade in Endangered Species, an international agreement that regulates the international trade of wild animals and plants in order to prevent any threat to their extinction of the species. The bill will provide for the designation of a management authority which grants export or import permits for trade of specimens, and scientific authority which gives advice on aspects related to impact on the survival of the specimens being traded, thus bringing us under a global agreement, and is therefore a welcome provision. So problems need to be addressed in this bill. The issue of vermin. In the Wildlife Protection Amendment Bill 21, any species falling under Schedule 2 may be declared as vermin. The bill also does not define the word vermin, thereby empowering the central government to directly declare any species as vermin. The particular species will not be covered under the Wildlife Protection Act and can be hunted or culled without restriction and once declared vermin. This specific change is projected to impact 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects, as they may be declared vermin and will be subject to hunting and killing. Thus, a more scientific approach should be taken in declaring an animal as vermin. Human-wildlife conflict is another issue that needs to be addressed. This issue of vermin is a part of bigger problem of human-wildlife conflict.
Several states have reported crop loss, incidents of crop raiding, and other incidents of crop damage due to animals. However, if the central government starts declaring a lot of these animals as vermin, they would be up for indiscriminate killing. The act of killing could result in severe ecological imbalance and impact the food chain in the region. Thus, a more specific approach has to be taken up in declaration of any species as vermin, and also the human-wildlife conflicts have to be addressed in a better way. So human-wildlife conflicts are also increasing due to habitat destruction and encroachment and the developmental works, industrialization and agricultural expansion, which leads to reduced forest cover and reduced land for wild animals. Therefore, these issues have to be addressed. In this regard, Andhra Pradesh has taken several steps involving the local community from different areas to help in reducing the animal-human conflict and ensuring protection of their wild habitat. Elephant trade is one of the issue that is effectively addressed in the state. While 43 of the Principal Act clearly provides for a ban on any sale or transfer of captive animals in their ownership, the proposed amendment bill will introduce an exemption clause to Section 43 in the case of transport of ownership of the live elephants. This exception has the potential of encouraging commercial trade of elephants, which may lead to elephants being subject to captivity and brutality. Therefore, the earlier ban should be upheld even in the case of elephants, and additional mechanism may be introduced for acquiring elephants in for religious institutions. Missing species. The species listed in all the 3 schedules of the bill is incomplete, as has been pointed out by several wildlife organizations, as well as the report submitted by the Parliamentary Standing Committee on the bill. And so there is a need for a greater inclusion of scientists, botanists, biologists, and others in the process of listing all the existing species of wildlife. Elimination of State Board for Wildlife. As per the existing Act, there exists a State Board for Wildlife headed by the Chief Minister as the chairperson and the Minister in charge of Forest and Wildlife as the Vice Chairperson. The proposed amendment bill renders the State Board to defunct and instead provides for establishing of a standing committee of the Board for Wildlife, which is to be headed by the Vice Chairperson, that is the Forest Minister, and not more than 10 members to be nominated by the Forest Minister. Therefore, it decreases the state's involvement and ability to make decisions in matters of wildlife. Andhra Pradesh wildlife conservation efforts are worth mentioning, sir. I would like to state that this opportunity to highlight some of the successful endeavors undertaken by the Andhra government toward wildlife conservation. Tiger numbers are on the rise. The tiger numbers in the state have seen a 60% rise from 47 in the year 2018 to 75 in 2022, with 64 in Nagarjuna Sagar Srisalem Tiger Reserve, 9 in Seshachalam Corridor, and 2 in Papikondalu, through a process of taking censuses with a more scientific method of employing drones and cameras. We are also proud to have the country's largest tiger reserve, NSTR, in Andhra Pradesh, spread over 3,727 square kilometers. The first time the black buck survey has been conducted by the Andhra Pradesh State Wildlife Department, started the first ever survey of black bugs along a stretch of islands between the Godavari and Dhavaleswaram and Yanam, with the goal of drawing up a conservation plan to protect the endangered species. Nodal officers are being deployed, especially in places like Vijayawada, Vizag, to prevent cases pertaining to cruelty against animals. The district police have appointed a circle inspector as the nodal officer to protect animals. People may contact the officer to register complaints pertaining to cruelty against the animals or cases of smuggling. There is also an ongoing plan for upgradation of infrastructure in Indira Gandhi Zoological Park in Visakhapatnam. The state has also been focusing on rescuing the king cobras in North Coastal Andhra Pradesh with King Cobra Conservation Program, rescuing a good number of cobras in the past 3 years to minimizing man-animal conflict across the state. The Forest Department has been working on several areas to address wildlife conservation and would appreciate the assistance of the central government in scaling up these efforts. While inclusion of sites is a welcome step, it is more focused on regulation of trade of wildlife rather than its conservation.
Protection of wildlife has to be seen along with protection of their wild habitat, and therefore we need to see the bill in accordance with the Forest Conservation Act and the Environment Protection Act. With these suggestions, we on behalf of YSR Congress Party support the bill. Thank you, sir. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल कई बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत वक्त लगा, हम सुनते थे कि इस पर ये काम हो रहा है, इस पर ये काम हो रहा है, इस पे यहाँ टेस्टिमोनियल आ रहा है। तो आमतौर पर मैं बधाई के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे होंगे, मैं समझता हूं कि उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। पसंद आए तो ग्रहण करिएगा, ना पसंद आए तब भी ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, संग्रहण कीजिएगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का क्यों आना हुआ, क्या वजह है, ये हम सब जानते हैं। मंत्री महोदय ने अपने आरंभिक संबोधन में इस पर बातें रखी। मेरी चिंता या यूं कहूं कि दुविधा बीते 19 के बाद से, जब से दोबारा सरकार बनी है, अभी मैं एक अपने साथी से बात कर रहा था जो अक्सर मित्रवत ही रहते हैं हमारे भाजपा के साथियों के साथ। उन्होंने एक बात कही कि सारी बिल का मजमू कुछ भी हो, एक चीज कॉमन है, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों बाद अगर आप ही की सत्ता बनी रही तो राज्य नाम की अवधारणा शायद कहीं खत्म ही ना हो जाए, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के बदले रहे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ यूनियन। तो वो एक पहली चिंता है, जो कि सब कुछ आप जानते हैं। आप ही मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही को एम्पावर किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही, और जो बात उन्होंने सही कही, कि ये यूपीए के दौरान का ही कमिटमेंट था। जाहिर है हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट, बीते दिनों अंटार्कटिका वाला बिल इसी सदन से पास हुआ, कहा गया कि ये कमिटमेंट है। तो मैं सदन के समक्ष आपके मद्देनजर, आपके माध्यम से कुछ वैसे कमिटमेंट्स भी रखता हूं जिस पर फौरी तौर पर पहल होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव लार्जली बीन साइलेंट ऑन दोस। कपल ऑफ देम आई जस्ट नोट। International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which talks about no distinction. The Committee on Elimination of Racial Discrimination. The International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Convention Against Torture